So today we have a new problem which name is the reverse English. So let's see the problem statement. So problem is said that we have given a head of the single linked list. We have to reverse the linked list and return the reverse linked list. If we have given an array, then we will reverse the array. And same as if we have given this linked list 1, 2, 3, 4, 5. These are all elements are connected to each other. It's a single linked list. So if we reverse this, then our array will be like 5 4 3 2 1. Our linked list will be like 5 4 3 2 1. So it is simply like we are reversing the array, but here we are using the linked list. So let's see the approach for this. If we have given this linked list 1 2 3 4 5, after reversing the linked list will be 5 4 3 2 1. So see, 1 2 3 4 5, it's approach. So here we are simply doing this, we are changing the arrow, we are changing the direction of the each arrow. If we change the direction 1 2 3 4 5, the numbers are same, but we are changing the direction. If we change the direction, like we will use three pointers. Previous pointer will be pointing to null, and current pointer will be pointing to head, and the next pointer will be pointing to the head to head connects. Then if we change the direction of the particular arrow, then it will reverse after after reversing, after changing all the arrows. So if we have to change this direction, so how will change? Current connects is showing this arrow. If current connect should be this arrow, so current connect is showing this arrow. So current connect should point previous, and previous should point current, and current should point next. Simply doing this. So algorithm is initially previous is null, current is head, and next is head connect. Previous is null, current is head, and next is current का मतलब head का next. So while current is not equal to null, we will use this loop. जब तक current null नहीं होता तब तक loop use करेंगे. Now in this loop what we will do, we will current का next equal to previous. Current का next is showing this arrow. This should point to the previous. So previous is null initially. So current का next initially one, one जो null को point करेगा, because one का next ये वाला है pointer. इसको मैं point करा रहा हूँ पीछे की ओर. पीछे की ओर मतलब previous की ओर. Previous null है तो ये null की ओर point करेगा. Now previous को आगे बढ़ाऊंगा, current पर ले जाऊंगा. Previous equals to current, और current को भी आगे बढ़ाऊंगा, next पर ले जाऊंगा. Next current equals to next. नाउ प्रीवियस कहाँ पर आ जाएगा, इस पर एरो पर ध्यान दो. ठीक है, प्रीवियस यहाँ पर आ जाएगा, करंट यहाँ पर आ जाएगा. इफ नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट, इस नेक्स्ट एक पॉइंटर है, नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट वाला आगे चले जाएगा ये. ठीक है, और फिर से सेम इस वाले ये 2 से 3 जो पॉइंटर है उसको रिवर्स कर देंगे, 3 से 2 कर देंगे, ऐसे ऐसे वाला पॉइंटर. सेम टेक्निक वर्क. सो finally we'll return the previous, because previous end वाले पॉइंटर पर आ जाएगा. So let's see the code for this. So initially what we'll do, we'll take 2.3 pointers. List node star previous equals to null. List node star current equals to head, और list node star next equals to head का next. ठीक है. Now what we'll do, we will apply a loop. Sorry, we will apply a loop while my current is not equals to null. While my current इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक मेरा करंट नल नहीं होता तब तक के लिए लूप चलाएंगे. इस लूप के अंदर क्या करेंगे, जो करंट का नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू क्या कर देंगे, प्रीवियस, जो मैंने बोला था ना. ठीक है, करंट का नेक्स्ट इज शोइंग दिस वाला पॉइंटर. ए वाला पॉइंटर को पीछे की ओर ले जाएंगे, प्रीवियस की, और प्रीवियस को आगे बढ़ा देंगे, करंट को भी आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट को भी आगे बढ़ा देंगे अगर एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट वाला. ठीक है, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, प्रीवियस इक्वल टू करंट, current equals to next. And if next का next, अगर next का next है, next is not equal to null, डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, next is not equal to null, then in that case next equals to next का next. ठीक है, next इक्वल टू next का next मतलब अगर next वाला null नहीं होता है, next का वाला null नहीं होता है, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, सिंपली उसे आगे बढ़ा दूंगा. सिंपली. And finally we will return our previous, because at the end previous will point the head pointer. Let's run this code and see if this will work or not.
definitely it will work. Let's node star next equals to head का next. So what is the problem? If we use n only, if we use here n only, then current का next n, oh sorry, हाँ हेड का नेक्स्ट ठीक है, देन करंट का नेक्स्ट, सॉरी इसको तो नेक्स्ट ही रहने दो, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, तो इक्वल टू करंट, करंट इक्वल टू नेक्स्ट, करंट इक्वल टू एन, ठीक है, एंड एन इज नॉट इक्वल टू नल, सो नेक्स्ट इक्वल टू एन इक्वल टू एन का नेक्स्ट, तो मैंने उसको नेक्स्ट के लिए एन बोल दिया, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो उस चक्कर में, ठीक है। नाउ अगेन रन दिस, this node star and equal to head connect. So what is the problem? Oh, we don't have data condition like if head equals to null. If my head equals to null, then simply we will return null. Again run this code. Yeah, it is working perfect. Let's submit this. अगर यहाँ पे नेक्स्ट भी लिखते तो वो भी काम करता, हम कंडीशन ये वाली भूल गए थे ना लिखना, इस चक्कर में वो वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। इट इज वर्किंग परफेक्ट एज यू कैन सी हियर। So this was the completed code. Let's again see the code. We are using three pointers. A previous pointer is pointing to the null, current pointer is pointing to the head, and next pointer is pointing to the head connect. And we are using a loop while current is not equal to null. And what we are doing here is we are pointing this pointer to the previous, like current का next equals to previous, then we are increasing this previous यहाँ पर आ जाएगा तो previous equals to current, current आगे आ जाएगा current equals to next, और next वाला अगर next वाला exist करता है, next का next exist करता है तो next equals to next का next बोल देंगे, ठीक है, and finally we return our previous. So this was the complete code. If you find this helpful then please like, share, subscribe, तो तक के लिए bye.